वेलकम बैक। सो जैसे कि आपने अभी अभी देखा कि मैंने कैसे पॉलिसीज को अप्लाई किया और एंड यू ऑलरेडी लर्न इट हाउ टू डील विद दिस ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। सो जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपको प्रॉपर्ली फ्लो करना है आपके ग्रुप पॉलिसी को, सो बेटर यू शुड रिमूव दिस काइंड ऑफ एनफोर्स्ड एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज यू नो अपेरेंटली आपको ही प्रॉब्लम होती है, बिकॉज अगर कहीं पर आपको स्पेसिफिकली अलाउ करना है तो यू कैन प्ले विद दैट. Now the thing is, now remove display. As you see right now, Chennai users are the people, like they cannot see the display options. But यहाँ पर आपके पास एक right side में कुछ आपके remove display के कुछ options हैं that I like to show with you. What is the meaning of this one is, right now you will see that I have applied on, means मैंने ये remove display policy मैंने apply की है domain level पे. और अगर ये मैं कहीं और भी अप्लाई करता हूँ, टेक एन एग्जांपल ऑन चेन्नई यूजर एज वेल. सो हेयर वंस यू प्रेस ओके, हेयर यू विल सी सम काइंड ऑफ चेंजेस विल बी डन लाइक दिस, लाइक इट इज अप्लाइड ऑन चेन्नई यूजर एज वेल. बट आई राइट नाउ आई डू नॉट वांट, बिकॉज अगर चेन्नई यूजर 01 राइट नाउ मैं आपको शो करता हूँ, राइट नाउ ही इज यूजिंग सी एस डी. बट यू शुड लॉग ऑफ एंड सी द चेन्नई यूजर कि क्या वो एक्सेस कर पा रहा है डिस्प्ले या नहीं, so that you can easily see the points. Once you go to other user and Chennai user 01 and then backslash and then password, so that यहाँ पर वैसे आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि that how to deal with other points in group policy, because कहाँ कैसे आप उसे modify कर सकते हैं in different ways. Also some kind of delegation permissions are there, so कैसे आप उसे delegate कर सकते हैं, that also you can check. Chennai user, now everything is perfect here. What is the problem now? I guess better I should log in with mylab.com backslash. Please log in. Thank you so much. My computer also, sometimes he speak with me. So go to the personalize and you see the display option. Still you cannot see any content on this. So guys, there's one option. Once you click on remove display, you will see on the right side some kind of scope is available. Right now this scope is applied on domain level, and here you will see the down authenticated user. Once you can remove it, you can remove, because right now authenticated, that means all the user, even including administrator, because administrator is also a authenticated user. So आप specifically आप apply कर सकते हैं सभी user पे, or you can do one more thing, you can add the specific user, like I will use Chennai user 01. Take an example, this is my user. So once you press OK, I want this policy will be applied only on Chennai user, so that if Chennai user 02 will be try to log in, तो उसको कोई issue ना हो. So that also you can do. So once you apply this filter, so that let's jump back on this and try with this also. Still, because this is only Chennai user 01, I log off this and log in again with Chennai user 02, so that you can see specifically उसी user पे जो आपने वहाँ पर add किया था. It's a common thing, I guess, no need to so much explain to you, but only that user affected, that is only my meaning is Chennai user is big, and then the password 713 star. Better you should do one thing, because my computer is always like to log in with the domain and backslash. So log in with the Chennai user 02, and after that हमने ये चेक करना है कि क्या पॉलिसी अप्लाई हुआ या नहीं. As per my concern, the policy should not applied, and once you click on this, and yes, it is the policy not applied. Even this policy applied on the domain level, still it is not applied on Chennai all users. Why? There's a reason, because it is only and only applied on this one, right? So once you removed, because it is not a good way to be work with this, there's other ways also that you can define the things only these people allowed, or if these people do not allow, something like that. Like take an example, I use this is authenticated, or en authenticated, I guess, yes it is. So okay, now I'll show you that allow user. I will delete this also, so that easily you can work with that. Now I have remove all display, that is applied on all. There's one option that you can select, like Chandigarh user 012 are the people जिनको आपने काम दिया है कि you can play with display properties. अभी जिसके साथ हमने डील किया, आपने परमिशन दी है, so that आप वो पॉलिसी भी अप्लाई कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि selected ये ग्रुप या ये पर्टिकुलर यूजर उसमें वर्क कर पाए. Take an example, better you should create a group in Chandigarh user, so that these you can give the name, the group, like these are my
display user, you can give display users, display Chandigarh display user, so that better you can easily identify. So CSD display user is a normal group, and then you can give the permission like go to the properties and add the user. I give CSD user, so check name, all are there. So I check only two, मतलब ये दोनों यूजर्स मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, 3 and 4 मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ. या फिर आप यू कैन डू वन थिंग, ऐड 3 4 वट एवर यू वॉन्ट टू ऐड, you can do with this. I just go for 1 and 2 only. I add only 2 user right now, just after that, and jump back on the same remove display. Now guys, in the group policy, how you would deal with this? So go to the delegation here on the down, and here you have to play with advanced option. So on the right side, advanced option had why the authenticated user, कैसे ये सिक्योरिटी अप्लाई हो रही है? बिकॉज द परमिशन ऑन ऑथेंटिकेटेड यूजर इज रीड एंड अप्लाई ग्रुप पॉलिसी. ये दो परमिशंस की वजह से आपकी सिक्योरिटीज अप्लाई हो रही हैं यहाँ पर. सो दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू डू CSD डिस्प्ले यूजर्स. ये जो ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप में मैं अप्लाई करता हूँ. दे कैन रीड, दैट्स ओके, बट आई डोंट वांट टू अप्लाई द पॉलिसी ऑन दीज वंस. ओके, so just apply like this and just apply. Are you sure? Yes. Okay, so that once the policy will be modified and apply, so you will see if you log in with CSD user. Now this is Chennai user. I will log off and log in with CSD user, and you will see the CSD user do not affect from that policy. CSD user 01 or 02, better you should go for 02 because you never ever saw. So send one to this start, this is the password of this user. Please accept because my computer is so much good. Yeah, thank you so much. So once you go to the properties of this and try to be click on display, and yes, not affected. But if I log in, because this is CSD user 02, and if I log off and log in with CSD user 03 or Chennai or any other user, definitely वहाँ पर वो policy affect होगी. Because if I log in with CSD user 03 and apply and log in with that, now we have to check कि क्या वो policy applied हुई है या नहीं. So as per our practical demonstration, it should apply. Definitely CSD user 03 cannot see, and yes it is, he cannot see. So that is the concept, and that is the way that you can play with these kind of thing as well. Now guys, this we talk about the some inheritance, block, override and enforced. ये सब हमने apply कर दिया, and we applied only the security on the basis of users configurations. Now let's be tried on computer configuration, and for that reason you have to do one thing. यहाँ पर चंडीगढ़ यूजर में आपको दिख रहा है कोई भी मेरा अकाउंट अवेलेबल नहीं है, because this is my client that I created. Okay, so just you need to drag and drop for the practical purpose in the Chandigarh user computer. So just drag it, don't show it, just press yes, because he's shared whatever the group policy applied on Chandigarh computer is will be applied on this computer. So now what is the meaning? मतलब क्या है यहाँ पर मैंने ऐड क्यों किया है? बिकॉज अब मैं आपके सामने ट्राई करने वाला हूँ कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशंस ग्रुप पॉलिसीज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? द यूजर्स पॉलिसी विल बी अप्लाइड ओनली ऑन यूजर्स. मतलब जो भी आप पॉलिसी अप्लाई करते हैं यूजर्स कॉन्फ़िगरेशंस के थ्रू, वो जस्ट आपकी अप्लाई होती है यूजर्स पे, चाहे वो किसी भी कंप्यूटर पे लॉगिन हो, डजंट मैटर. लेकिन अगर आप कंप्यूटर मीन्स एनी कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशंस अप्लाई करेंगे किसी भी स्पेसिफिक कंप्यूटर पे, लाइक आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑन क्लाइंट, सो दैट कोई भी यूज़र इस कंप्यूटर पे आएगा, इवन द एडमिनिस्ट्रेटर पीपल भी लॉगिन करेगा, उसके ऊपर भी वो सिक्योरिटी अप्लाई होगी. व्हाई? बिकॉज वो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशंस अप्लाइड हुई है क्लाइंट कंप्यूटर पे, नॉट किसी यूज़र पे. ओके, clear about this, means don't be confused about it. So that's why I add this one, and let's jump back on the Chandigarh computers here. I will right click, I will create one policy here once first, or you can do it here also. I can create a policy, and you can create any policy like com policy. You can give any name. I give com policy. Just press OK, and here's an policy. Now you will see that your policy in apply, right click and click add it, because this is the way to be deal. And here's an option, computer configurations, and this is policy. And I tell you, अगर आप कभी policy apply करती हैं, the main portion means main part in the group policy is
एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशंस का हो या यूज़र का, मेन पॉलिसी यहीं से अप्लाई होती हैं. सो विच ऑप्शन आई कैन टेल यू टू बेटर शो that as so that easily you can understand the options. If there's any option that I can deal with that. Windows calendar, not like that. Because actually I have never, okay, Windows media player. So this is only the thing. Now you will see desktop creation, there is nothing like that, not at all. It is not a good one. Sideshow, automatic awake, turn off Windows sideshow, because what sideshow is, you can configure. Let me give me some time, let me check which one is best policy for you so that you can easily understand. I applied the security, मैंने security apply कर दी है, and the policy I applied here, it is a desktop gadget, because वही मुझे लगा कि it is the easiest way to show you about in the computer configuration. So I just applied in the desktop gadget. Right now you will see here, and once you go to this part, and you will see I just enable this policy, turn off desktop gadgets, so that जो भी कोई भी यूजर हो, it is XYZ user, right now I am on CSD03, वो कभी भी desktop gadget gallery या whatever he wants to go to all programs and try to be login, desktop gallery को भी वो click करेगा, so it will become like this. It is managed by system administrator or any other, even the administrator also is trying to be applied, तो उसके ऊपर वो apply हो जाएगी. That is sort of kind of things. Now guys, what is the meaning of the next is we have the options loopback processing. इससे पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ डिस्कस करना चाहता हूं that what is the meaning of this. Guys, आप कोई भी पॉलिसी अप्लाई करते हैं, you always apply the policy on two bases. One is called computer configuration basis and another is user basis, right? यही आप पॉलिसी अप्लाई करते हैं. तो टेक एन एग्जांपल, मैंने कुछ पॉलिसी अप्लाई की है, डोमेन लेवल पॉलिसी. सो आई जस्ट राइट डाउन DC1 बिकॉज दिस इज पॉलिसी. दिस इज मेरे पास कुछ पॉलिसी है, मैंने दो पॉलिसी मैंने DC लेवल पे, डोमेन लेवल पे अप्लाई की हैं, और कुछ मैंने OU1, मैंने यहाँ पर एक पॉलिसी अप्लाई की है ऑन OU. सेम काइंड ऑफ थिंग मैंने यूज़र कंप्यूटर पॉलिसी भी मैंने अप्लाई की है DC डोमेन लेवल पे भी, और यहाँ पर मेरी DC2 एंड OU1 मैंने यहाँ पर भी अप्लाई की है. सो ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि टेक एन एग्जांपल कि आपने पॉलिसी अप्लाई कर दी है, दैट इज़ ओके. आपने जो पॉलिसी अप्लाई की है डोमेन लेवल पे, OU लेवल पे, डेफिनेटली इट विल बी अप्लाइड ऑन PC, मीन्स कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशंस. कोई भी यूज़र लॉगिन करे, डजंट मैटर. सेम काइंड ऑफ थिंग, कोई भी यूज़र कहीं पर भी लॉगिन करे तो उनको जो भी पॉलिसी आपने XYZ पॉलिसी अप्लाई की है वो ये अप्लाई होंगी. तो टोटल पॉलिसी क्या हुई, यहाँ पर हुई 3 पॉलिसी, 3 policies, and here also how many policies are there? 3 policies. Now what is the meaning of loopback processing? Take an example, sometime in the company happened कि आपकी 2 शिफ्ट में 2 एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं, and one administrator suggest कि better apply XYZ policy. Another administrator saw and उसने वो पॉलिसी रिमूव कर दी, and he, because according to his experience, वो बोलता है, oh no, it is not a good options to be applied, I don't like to apply this one. So you know what, these kind of fights sometime it happen in the company, or in because both are experienced person अपने अपने level को definitely trying to be एक show करने के लिए या फिर अपनी ability show करने के लिए definitely they will provide their own suggestions, they will give their own suggestions. So ये loopback processing वहाँ पर वर्कआउट करता है जहाँ पर आपकी कंसिस्टेंसीज या फिर एक कांस्टेंट लेवल पे दोनों की पॉलिसीज वर्कआउट करें. कैसे? नाउ टेक एन एग्जांपल, एडमिनिस्ट्रेटर 1 अप्लाइड PC पॉलिसीज, दैट इज ऑफ कोर्स उसने PCP मतलब कंप्यूटर लेवल कॉन्फ़िगरेशंस अप्लाई की, ही इज मास्टर इन दैट, ही इज वेरी गुड इन दैट. दूसरे यूजर्स ने अप्लाई की एज अ यूजर बेस्ड, दैट इज ऑल्सो अनदर एडमिनिस्ट्रेटर, दैट इज डन. The loopback processing is the common one for all. That means I applied on OU2. This is the new policy I created and I applied on PC. Take an example. It is ये affect करेगा दोनों को ही. Definitely it will affect both of them. That's why if you applied computer side, so definitely computer side, you know that I applied this one. If you apply merge mode, what is this? I'm trying to explain you. Merge mode, user side, definitely it will be only affect the user, and if you apply the user side, it will only affect the computer. But what is this?
अप्लाइड कंप्यूटर यूजर साइड, ये कैसे पॉसिबल है कि दोनों की पॉलिसी कंसीडर करें? तो गाइज इट इज पॉसिबल. एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन व्हेन यू कॉन्फ़िगर मर्ज मोड, ही विल थिंक, जो भी आप एक पॉलिसी अप्लाई करेंगे, पॉलिसी क्रिएट करेंगे, वो इस पॉलिसी को, OU2 पॉलिसी को कंसीडर करेगा. वंस यू अप्लाइड ऑन पीसी, वो सोचेगा ये कंप्यूटर मीन्स यूजर लेवल पे सिक्योरिटी अप्लाई कर रहा है. एक्चुअली इट इज नथिंग लाइक दैट. मैं कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशंस में ही अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन वो क्या सोचेगा कि OU2 की जो पॉलिसी आप अप्लाई कर रहे हैं वो उसको ऑटोमेटिकली कंसीडर करेगा एज अ यूजर. एक्चुअली वो यूजर नहीं है. सो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द लूप बैक प्रोसेसिंग. Guys, I can understand that you are a little bit confused about it. What is this I'm talking about? एक बार फिर मैं बोलता हूं, अप्लाई कंप्यूटर साइड मतलब क्या है? Definitely you talk about only computer side configurations, like in the group policy always we talk about here. So there are two kind of policies. One is computer configurations like this, one is user. So definitely right now I'm only talking about in computer side computer configurations. यूजर साइड के बारे में जब मैं बात करूंगा तो डेफिनेटली मैं बात करूंगा यूजर कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में, तो वो भी क्लियर है. बट व्हाट इज कंप्यूटर यूजर साइड कॉन्फ़िगरेशन? गाइस, the policy is created anywhere, doesn't matter, but definitely specific OU पे अप्लाई होगी नो डाउट, लेकिन वो पॉलिसी मैं अप्लाई करूंगा कंप्यूटर लेवल पे, लेकिन वो उस पॉलिसी को कंसीडर करेगा एज अ यूजर कि उसने पॉलिसी अप्लाई की है एज ए यूजर. सो कोई भी यूजर जब भी लॉग इन करेगा वो अफेक्ट होगा. सो कैसे ये वर्कआउट करना है? दैट इज यू हैव टू जंप बैक ऑन द सर्वर एंड यू हैव टू क्रिएट वन मोर पॉलिसी. What is that policy? Go to the Chandigarh computer and create a link, or like you can create a loop back so that easily आप उसे अंडरस्टैंड करें. लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर मैं यहाँ पे इस पे से क्लिक हटाता हूँ, what is my meaning, लिंक इनेबल. सो गाइस, यहाँ पर इसका कोई यूज नहीं होगा. सो कीप रिमेंबर, once you right click and you will see it is faded, ये already faded हो चुका है. So that dim, it is not, you know, like once you click on link enable, वो up हो गया है, that means, right? So this is the way. So just you need to do one thing in the loop back, just right click on edit. The first thing you have to do, you have to click on apply the policies. In the policy, go to the administrative template, then system policy, then यहाँ पर आपको select करना है group policy, and यहाँ पर आपकी एक policy होगी that is called user group policy loopback processing mode. आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है once you enable, and what kind of policy you want to enable. I want to enable merge policy, so जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया. So press OK once it is applied, and आप कैसे आप इसे प्रेफर करना चाहेंगे, कैसे आप दिखाना चाहेंगे, it's all up to you. Better I should go to सेम थिंग और एनी अदर थिंग. अभी तो मैंने आपके सामने दिखाया था दैट यू कैन टॉक डेस्कटॉप गैजेट. आई जस्ट मैंने टर्न ऑफ किया था वहाँ पर. तो आप कोई भी पॉलिसी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो आपको यू फील इट दैट शट डाउन ऑप्शन. बेटर यू शुड turn off legacy remote shutdown, turn off the session during shutdown, not a good option. Guys, again give me a little bit time, I will just come back and Windows Explorer, anything is there, because I just want to show you that at least you can see the differences. So my meaning is anything you can apply here, and any kind of configurations once you apply it, it will be applied in the end. Okay guys, in the end वो policy apply होगी. तो मतलब क्या है? टेक एन एग्जाम्पल, आई विल क्लिक ऑन मीडिया प्लेयर एंड not media player, Windows Defender, because I do not have Windows Defender, but still turn off Windows Defender. Just take an example, I consider this one. So just I applied and okay, मैंने सिक्योरिटी अप्लाई कर दी. तो दैट मीन्स मतलब क्या है कि पहले वो अप्लाई करेगा कंप्यूटर पॉलिसीज को, मर्ज मोड अप्लाई होगी जो भी पॉलिसीज थी, फिर वो अप्लाई करेगा यूजर साइड पॉलिसीज को, अप्लाई होगी, एंड फाइनली जो कॉमन वेबसाइट, जो नॉट वेबसाइट मीन्स कॉमन पॉलिसी जो आपकी अलग है कंप्यूटर और यूजर से, वो फाइनली अप्लाइड होगी इन द मर्ज मोड इन दिस केस. सो वंस यू हैव टू इनेबल दिस, वंस इट इज अप्लाइड, एंड दैट टू बी ऑल. Even you log in with this, just you need to do one thing, just GP update force, and then after that you have to go to the control panel, and then you have to see that it is applied or not. Let's see, jump back on large icons or whatever. I hope, yeah, it is Windows Defender. So once you click on this, so definitely the policy will be applied like this. Please work, at least show me something. Yeah, this program is turned off because of this kind of things, because it is not available. Even the same thing
इवन मैं अगर यहाँ पे लॉग इन करता हूँ, डजंट मैटर देन, मैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा ट्रेनर अकाउंट है, इट इज़ द अकाउंट जिसको हाईएस्ट प्रायोरिटीज हैं, जैसे कि आप जानते भी हैं, इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटर, सो आई एम गोइंग टू यूज इज अ trainer and the password of the user. इवन द एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का कोई भी यूजर लॉग इन करेगा, कोई उसको डिफरेंस नहीं पड़ेगा. स्टिल यू गो टू द कंट्रोल पैनल, स्टिल यू ट्राइंग टू बी एक्सेस, इट इज डिसेबल्ड default like this program is turned off. So the meaning is the same, like if you deal with these kind of things, then it will be affected. So guys, this is all about in this video. Wait for my next video, stay tuned, stay connected. मैं next video में आ रहा हूँ बहुत जल्दी, and I hope you liked this video. I hope you enjoy also and you clear the concept. Still कोई भी doubt है, please you can share with me, and thanks a lot to watch my video. Thank you so much for your comments and thank you so much for everything. Thank you so much.